Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to a new video. In this video, we are going to discuss about CA Foundation Paper 1 Principles and Practice of Accounting Chapter 1 Theoretical Framework Unit 6 Accounting Policies. As we can all see, this is a very small chapter and this could be completed in a very short period of time, but this involves some technical theories which if helped or which if explained can be understood in a detail or can be understood very fluently. So let's start our discussion. If you like my videos, please give this video a like and subscribe to my channel for more such interesting videos. So let's start. Accounting Policies, Unit 6. So, selection of accounting policies. In our households and even in businesses, we have policies to maintain our household or maintain the business. For an example, in our houses or in our household, we have some policies. For example, आपके पापा कहते हैं कि रात 10 बजे के बाद बाहर मत रहना. ये फैमिली का एक पॉलिसी है. या फिर क्लास 10th बहुत अच्छे नंबर से पास करना हमारे फैमिली का एक पॉलिसी है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो. ये सब एक फैमिली का पॉलिसी है या फिर हाउस होल्ड का पॉलिसी है. हाउस होल्ड का यह भी पॉलिसी है कि एक लिमिटेड अमाउंट में खर्चा चलाना, मंथली एक्सपेंसेस एक लिमिटेड अमाउंट में चलाना, ये भी पॉलिसी के अंदर आता है. एक बिजनेस के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए या फिर एक कंपनी के लिए बिजनेस पॉलिसीज रहते हैं. जिस बिजनेस पॉलिसीज को यूज करके वो डे टू डे बिजनेस करता है उस एंटरप्राइज या फिर उनके रिसोर्सेज को मैनेज करता है उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग या फिर पॉलिसीज को मेंटेन करते हुए. इसी तरीके से इन द सेम मैनर अकाउंटिंग करने का भी कुछ पॉलिसीज होता है. जिस पॉलिसीज को मेंटेन करके या फिर उसको फॉलो करके अकाउंटिंग किया जाता है उसे ही हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं. सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने का भी कुछ रूल या फिर कुछ चेकलिस्ट होता है जिसको फॉलो करने के बाद ही एक अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट हो पाता है. So, selection of accounting policy is based on 3 accounting policies or 3 accounting concepts. Accounting concepts are already done in this channel in our Unit 2 video. Please check out my channel for the Unit 2 video if you have not done. So, selection of accounting policies is based on three accounting concepts: prudence, substance over form, and materiality. What does prudence say? According to prudence, an accountant, while making the financial statements, should anticipate for all losses and liabilities, but should not recognize in the financial statements any gain or an asset. This is the prudence concept. Substance over form क्या है? यह भी एक अकाउंटिंग कंसेप्ट ही बोला जा सकता है. सब्सटेंस ओवर फॉर्म में ये बोला जाता है कि जिस भी आइटम ऑफ और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज सब्सटेंस और दैट इज मोर मटेरियल और मोर यूजफुल फॉर द यूजर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स rather than that items that are only required under law. As per substance over form, the items of financial statements should be according to the usefulness for the users of the financial statements and not only on the basis of recommendation of law or statutes. What is materiality? Materiality is also an accounting policy or accounting concept. As per materiality concept, the items of financial statements should be material or should be useful. The items that are material to the financial statements should be included in the financial statements
What does material means? Material means of certain value that affects the decision of the users. Any item or any valuation of an item that affects the decision making of the users of the accounting financial statements is known as material item, and that is mentioned by materiality. So, our first concept, meaning of accounting policy. What is an accounting policy? Accounting policies refer to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. So, what is accounting policies? Accounting policies refer to the specific accounting principles. These are the specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise or the business enterprise in the preparation and presentation of financial statements. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है या फिर उस मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का मेथड को बोला जाता है, जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा अपनाया जाता है। कब? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के समय जो पॉलिसीज को अपनाया जाता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अपनाया जाता है, उसे ही हम अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। Policies are based on various accounting concepts, principles, and conventions that have already been explained in Unit 2 of Chapter 1. There is no single list of accounting policies. Accounting policies का कुछ लिस्ट नहीं होता है। जिस भी रूल को या फिर मेथड को अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए अपनाया जाता है, उसे ही हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। एक बिजनेस ये मान सकता है कि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने के जो डिसीजन है, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंडर आता है। There is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprises in all circumstances. एक कंपनी या फिर एक एंटरप्राइज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर सकता है या फिर दूसरे कंपनी अक्रूवल बेसिस यूज कर सकता है। इसीलिए कुछ लिस्ट नहीं है जो कि हर एंटरप्राइज पे लागू हो। There is no specific list that can be applicable on all business enterprises. One business can use a cash basis of accounting and another can use accrual basis. It depends on the accounting policies that is different from enterprise to enterprise. Enterprises operate in diverse and complex environmental situations, and so they have to adopt various policies. The choice of specific accounting policy appropriate to the specific circumstances in which the enterprise is operating calls for considerate judgment by the management. Accounting policy को डिसाइड करना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। The application and adoption of accounting policies is merely dependent on the judgment of the management or judgment by the management. ICAI, or the Institute of Chartered Accountants of India, has been trying to reduce the number of acceptable accounting policies through guidance notes and accounting standards in its combined efforts with the government, other regulatory agencies, and progressive managements. Why? Why ICAI is reducing the applicable accounting concepts or accounting policies? To bring over a comparability among accounting policies or accounting financial statements of enterprise and to enterprise. If different enterprises use different accounting policies, there would be no comparability of the financial statements. To enhance the property
for comparing different financial statements, there should be a set of accounting policies that should be fundamental to be applied on every business enterprise. And that is why Institute of Chartered Accountants of India is working to reduce the number of acceptable accounting policies. अगर सॉरी अगर बहुत ज्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंटेन किया जाएगा या फिर डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को मेंटेन करता रहेगा, तब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बिजनेस टू बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो अपने एक एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक का जो कंपैरेबिलिटी है वो नहीं रहेगा. कंपैरेबिलिटी या फिर यूजफुलनेस को बढ़ाने के लिए, एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज कंपैरिजन करने के लिए ICAI is reducing the number of fundamental accounting policies. The areas wherein different accounting policies are frequently entered can be given as follows. That is, valuation of inventories, valuation of investments. For an example, for the valuation of inventories, we can use FIFO method as well as LIFO method. For the valuation of inventories, we can use FIFO method, we can use LIFO method, we can use average price method. So there are multiple options. That is why the comparability of the financial statements gets affected. The usability by the users gets affected. Investments can also similarly be can be valued following different accounting policies like FIFO, LIFO, etc., average pricing method. And that is why, to reduce these effects or these problems, ICAI is reducing the acceptable or fundamental accounting policies. The list should not be taken as exhaustive but is only illustrative. ये दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा जो ऑप्शंस है वो नहीं है. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है, वैल्यूएशन ऑफ अ सेल भी हो सकता है, वैल्यूएशन ऑफ अ परचेज भी हो सकता है, या फिर वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट भी हो सकता है. वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकता है. इसीलिए जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं बट इलस्ट्रेटिव मेथड में इलस्ट्रेशन के लिए, समझने के लिए वो दिया गया है. यहां पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग थोड़ा ध्यान देकर ये इसको रीड करेंगे. सपोज एन एंटरप्राइज होल्ड्स सम इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट द एंड of an accounting period. I hope आपको समझ गया होगा. Suppose an enterprise holds some investments in the form of shares of a company at the end of an accounting period. For valuation of shares, the enterprise may adopt FIFO method, average method, LIFO method, etc. एग्जाम्पल के तरीके से समझ लीजिए, एक बिजनेस फर्म है. वो बिजनेस फर्म ईयर एंडिंग में बहुत कंपनीज का इन्वेस्टमेंट्स या फिर शेयर्स होल्ड कर रहा है. उस इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करने के लिए वो FIFO मेथड भी यूज कर सकता है, एवरेज मेथड भी यूज कर सकता है, LIFO मेथड भी यूज कर सकता है, और बहुत फॉर्मूलाज या फिर बहुत मेथड्स हो सकता है जो उस एंटरप्राइज को यूज करने का ऑप्शन है. इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज. अगर मैनेजमेंट मान लेता है या फिर डिसाइड कर लेता है कि LIFO मेथड या फिर FIFO मेथड यूज किया जाएगा, तब जब वो जजमेंट लिया जा चुका है कि FIFO मेथड ही यूज किया जाएगा बिजनेस के द्वारा, उसे ही हम लोग उस बिजनेस का अकाउंटिंग पॉलिसी कहेंगे. द मेथड सिलेक्टेड बाय द एंटरप्राइज for valuation is called the accounting policy. The method selected by the enterprise for valuation is called the accounting policy.
Different enterprises may adopt different accounting policies. Different enterprises different accounting policy adopt कर सकता है. Likewise, different methods of providing depreciation on fixed assets, जो भी depreciation provide किया जाता है ना, depreciation का भी methods होता है. For example, straight line basis, written down value method, और भी बहुत सारा methods होता है. इसीलिए जिस भी एक कंपनी, for example, a company decides to provide depreciation through straight line method, for that company it is the accounting policy to write depreciation as per straight line method. Selection of accounting policies. Our next topic is selection of accounting policies. Choice of accounting policy is an important policy decision which affects the performance measurement as well as financial position of the business entity. Accounting policy को select करना बहुत important होता है. क्यों एक business एक important क्यों बोला जाता है? एक accounting policy के वजह से performance business का performance measurement affect होता है, financial position भी affect होता है. Choice of accounting policy is important policy decision. क्यों? It affects the performance measurement as well as financial position of the business entity. Selection of inappropriate accounting policy may lead to understatement. Accounting policy गलत होने से क्या होगा? It might result to understatement or overstatement of performance and financial position. If an inappropriate accounting policy is used, it can result to an understatement or overstatement of performance or of financial position of a business enterprise. Thus, accounting policy should be selected with due care after considering its effects on the financial performance of the business enterprise from the angle of various users of accounts. It is believed that no unified and exhaustive list of accounting policies can be suggested which has universal application. Universal application का कुछ भी universal application जिस भी accounting policies का हो ऐसा कुछ list बनाया नहीं जा सकता है. No exhaustive list can be prepared which consists of accounting policies that has universal application. There are major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application of accounting policies. That is prudence, substance over form, materiality. इन तीनों चीजों को ध्यान में या फिर नजरअंदाज करते हुए हम लोगों को एक अकाउंटिंग पॉलिसी को डिसाइड करना पड़ता है. By looking into these three characteristics, that is the number 1 prudence, number 2 substance over form, number 3 materiality. Looking into these three characteristics, we can discuss or we can decide an accounting policy that could be applicable for the business enterprise. The financial statements should be prepared on the basis of such accounting policies which exhibit true and fair view of the statement of affairs of balance sheet and profit and loss account. ऐसा accounting policies को adopt करना जरूरी है जो कि balance sheet, profit and loss and statement of affairs जो है उसका true and fair view दिखाए. Such accounting policies should be adopted that shows or exhibits a true and fair view of the statement of affairs, balance sheet and profit and loss account of a business enterprise. Examples wherein selection from a set of accounting policies is made can be given as follows. What are the examples? Inventories are valued at cost except for finished goods and byproducts. Finished goods are valued at lower of cost or market value and byproducts are valued at net realizable value. ये different accounting policies है. Finished goods को lower of cost या फिर market value में value किया जाता है.
बाई प्रोडक्ट्स को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू किया जाता है। ये वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो बिजनेस के द्वारा अपनाया जाता है। Investments, that is long-term investments, are valued at their acquisition cost. Long-term investments को long acquisition cost में value किया जाता है। Provision for permanent diminution the value has been made wherever necessary. अगर permanent diminution in the value of investment हो जाए, permanently उस investment का value घट जाए, तब एक provision भी बनाना पड़ता है, एक सेट ऑफ एक अमाउंट को सेट ऑफ करना भी जरूरी है उस अमाउंट से या फिर उस एक्विजिशन कॉस्ट से। ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी, एक बिजनेस का अकाउंटिंग पॉलिसी कह देता है कब उस अमाउंट को एक्विजिशन कॉस्ट से या फिर वैल्यू से रिड्यूस करना जरूरी है। समटाइम्स अ रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर आइटम्स इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट। कुछ कभी कभी होता है कि इस बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर कुछ अदर स्टेटमेंट में कुछ रॉन्ग या फिर इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो जाए। डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इज नेसेसरी इन एनी केस। जब भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है उसका डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, बट डिस्क्लोजर कैन नॉट रेक्टिफाई अ रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। हम सबको पता है एक डिस्क्लोजर देने से वो जो रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर इनएप्रोप्रिएट या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाए, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। A change in accounting policy should be made in the following conditions. कब अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है या फिर करना जरूरी हो जाता है? Whenever there is these two situations, then an accountant of a business enterprise should change the accounting policies. It is required by some statute or for the compliance of an accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए या फिर एक लॉ से कंप्लाई करने के लिए या फिर लॉ को मानने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना जरूरी है। टू अबाइड बाय एनी स्टैट्यूट और लॉ और टू कंप्लाई विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, और change would result to more appropriate presentation of financial statement. अगर एक अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन और भी अप्रोप्रिएट या फिर और भी एक्यूरेट बन जाए, तब भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना जरूरी है। If the change in accounting policy results to an appropriate and accurate presentation of financial statement, then also it becomes necessary to change that accounting policy. Change in accounting policy may have a material effect on the items of financial statements. Accounting policy को change करने के वजह से एक considerable effect या फिर considerable change हो सकता है जो कि एक यूजर का डिसीजन को कुछ डिफरेंस पहुंचा सके। A change in accounting policy can be material in the financial statements. That means a change in accounting policy may affect the decision of the users of the financial statements. For example, if cost formula used for inventory valuation is changed from weighted average to FIFO, cost formula is changed from weighted average to FIFO method, or if interest is capitalized which was earlier not in practice, or if proportionate amount of interest is changed to inventory which was not earlier the case of practice, all this may increase or decrease the net profit. Changes के वजह से जो अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब एग्जांपल्स था, अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, और नेट प्रॉफिट मटेरियल आइटम है,
इसीलिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी मटेरियल हो जाता है. Unless the effect of such change in accounting policy is quantified, the financial statements may not help the users of accounts. So, इसका मतलब क्या है? अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजफुल बनाना है, जो भी इफेक्ट एक चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में होता है, उसको मॉनिटरी टर्म्स में क्वांटिफाई करना या फिर दिखाना जरूरी हो जाता है. To make a financial statement useful or material for the users of the financial statements, any effect which is due to a change in accounting policy should be quantified and quantified in terms of money. Unless effect of such change of accounting policy is quantified, financial statements may not help the users of accounts. Therefore, it is necessary to quantify the effect of change on financial statements. It is necessary to quantify the effect of change. Quantify the effect of change on financial statement items. For example, Omega Enterprises revised its accounting policy relating to valuation of inventories to include applicable production overheads. Then itself, it should be declared in the financial statements, and also it should be quantified. It should have a quantified in monetary term. It should be quantified in monetary term. So now let's summarize the entire chapter. It was a very small chapter. Accounting policies refer to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Accounting policies क्या है? Accounting policies refer to specific accounting principles या फिर the methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Policies are based on various accounting concepts, principles and conventions. Policies जो है accounting concepts के ऊपर, principles के ऊपर या फिर accounting conventions के ऊपर dependent है या फिर based है. Three major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application of accounting policy. एक accounting policy को select या फिर apply करने के लिए three major characteristics होता है. क्या क्या होता है वो? Prudence concept, substance over form and materiality. अगर इन सब को briefly जानना, इसके ऊपर briefly knowledge पाना है तो Unit 2 का वीडियो जाके देख लेना. A change in accounting policies should be made in the following conditions. कब एक accounting policy को change करना जरूरी है या फिर change हो सकता है? If it is required by some statute or for compliance with accounting standard. Number 2, change would result in more appropriate presentation of financial statement. So, we have come to an end of this unit. Thank you for watching. And if you liked this video, if you liked my efforts, please give this video a like and also subscribe to my channel for more such videos. Stay safe, stay healthy, keep studying. Thank you and bye bye.